रहे थे उससे भी ज़्यादा जोर से दौड़े थे। कहाँ दौड़ रहा था बच्चा, वो बहुत ऐसे आराम से पूंछ नीचे करके आ रहा था। नीचे कह रहा था हाँ, वो बोला ना डॉक्टर ने बोला कि बहुत हाफ रैग होगा। स्ट्रेस के कारण वो भाग रहा था। हाँ, डर गया था ना, डर गया ना। टुकू बच्चे, इसको बहुत घबराहट आ रही है, टंग इसकी बहुत लंबी निकलती जा रही है। पानी पीने की ना उसको। मैं काम करती हूँ, मैं आपको बॉटल पे थोड़ा सा ड्रॉप देती हूँ, आप इसकी टंग पे डालते जाना, ठीक है। ये अभी ऐसे ही कर रहा है, हर चीज़ में ना सुन नहीं रहा है। औफा देखो, आप पहले बीमार हो बेटा, और प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ, आएगा इससे। हाँ ठीक है, कैसे दोगे? तो ऐसे गिर जाएगा दो के तब। औफी चाचा पानी पी लो बेटा, थोड़ा सा। नहीं पीना। मैं एक काम करूँ हिमांशु, एक आइडिया आया मेरे को, मैं आपको ना टिश्यू पेपर गीला करके देती हूँ, आप एक एक ड्रॉप इसके मुंह ऐसे खोल के निचोड़ो उसके। मुंह खोल ही नहीं रहा बच्चे। मुझे पता है आपको खुलवाना पड़ेगा। कैसे खुलवाओ? आप खुलवा के करो। दो दो हाथ से पकड़ाओ। ठीक है, पकड़ो। ट्राई करो। मर्फी को क्या हुआ है यार, हमें भी नहीं पता चल रहा है मर्फी को क्या हुआ है, अचानक से वो चलना बंद कर गया है, बिल्कुल वॉक नहीं कर रहा है। अभी हम उसको लेके हॉस्पिटल में ही बैठे हुए हैं। आप इसी पे थोड़ा सा डालो। हाँ, पानी भी नहीं पी रहा है, थोड़ा सा और डालो। हाँ आफा पानी पियो। नुगु ए लो, ओ शिट, रुको, ऐसे करो, हाँ करो, अच्छे, ये हाँ पियो पियो, उसको पानी को पियो। पिया कि नहीं पता नहीं चला। नहीं मैंने निचोड़ा ना, गया उसके एटलीस्ट टंग पे तो गया ना, ये देखो। हाँ पानी पियो, गुड बॉय गुड बॉय। पानी नहीं पी रहा, लेकिन उसको घबराहट भी आ रही है, मुझे पता चल रहा है। थोड़ा सा और डालो, इसको मैं पानी दूँ। ये आराम से पानी भी नहीं पी रहे हमें। हाँ कोई बात नहीं, काट ले तू मुझे। बच्चो तू रह जा, तू रह जा, तू रह जा, बच। लास्ट मफा बहुत गमी लग रही बेटू। अच्छा ठीक है, रहने दो, ओके फाइन। नहीं पीना चाहता। उठना नहीं, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना। बॉटल छोड़ दो। नहीं, डोंट वरी, ही विल बी फाइन। नहीं यार, वी आर रियली कंसर्न राइट नाउ। वो सुबह से वॉक पे भी नहीं गया है आज। अभी 1 बजने वाला है यहाँ पे। नीचे जाना चाहिए। छोड़ दो छोड़ दो, हाँ गर्मी लग रही है उसको, छोड़ दो। चिट्टू बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ डर के मारे थोड़ा सा चलता है। हाँ। डॉक्टर ने भी वही बोला है कि डर से थोड़ा सा चल रहा है वो यहाँ पे, घर पे तो वो खड़ा भी नहीं हो रहा है। गम्मी लगी मेरी बच्ची को, इसलिए बैठ गया, नीचे बैठा इसलिए। नीचे बैठ गया। हाय मफी, सब बोल रहे हैं हेलो। मफा सब आपको विशेष भेज रहे हैं, पता है। हम लोग तो अपना खाना वाना भी लेके आए हैं, कि कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि हम इमरजेंसी में लेके आए हैं। नहीं नथिंग सीरियस तो आई डोंट नो, क्योंकि मर्फी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। Hello, how are we doing? Good. Hi, Murphy. You're so cute with your little hairdo and everything. Yeah. Thank Yeah. I'm Dr. Dan Howard. I think I've met you guys before with Yes. Murphy. Yeah. I think so. I also remember vaguely. Yeah, I think he had a broken claw, a broken toe. Oh my God, he always comes with the claw and leg problem with you. Okay. Yeah, I think it's been 2 years. something like that. I was looking back and I'm like, oh, I think I've seen this guy. Oh. So it sounds like he's a little bit ouchy, a little painful today. Yeah. Mm-hmm. He's in pain. Yeah, and then that kind of that back leg, the back right, you're seeing Somewhere around this primarily. region it seems like. Okay, sure. Himanshu, you are confusing me now. Somewhere But on the other back. side, yeah. Maybe What's on the other side? Is it okay if I give him a little piece Yeah, of the cookie? yeah, sure. Okay. So the good news is, I was kind of back here when he came to just for me to take a peek at him. Mm-hmm. And he was. You like my cookie? He's very picky. What's the flavor? Is it a beef? Gosh. Beef? It's it's like a beef, yeah. Yeah, he barely. He does it. Okay. He well. likes chicken flavors. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, that's fine. He's That's a man with distinguished taste. He is. That's okay. He's thinking about it.
So I did see that he was able to use his leg pretty well, which is good. I did see he was a little bit off on Yeah. it, so we're gonna check that out. Mhm. But the good news is at least how he was moving. I think something like a fracture or a break or a dislocation are less likely, so that's good. So that's good. So what the plan is we're going to put him on our little mat here, Okay. and then we're going to put his little cone collar on, Mhm. just to be able to kind of hang on to him there, just in case I hit something that hurts him. Yeah. And then I'll do my exam. We'll see what we can feel. Yeah. And we'll decide and go from there. Yeah. I'm sure like some points are painful, very specific points, because when we are picking him up, might be because of that strain or stretch, he makes that painful sounds. Yeah, so if I try to picking up from the front like sidelines, that. Yeah. he's gonna Scry. make it, Okay. yeah. Yeah. But if I do like on both sides, then he's fine. So, Good. Okay, yeah. perfect. Yep, we'll do it like that, and then we'll do this And when I cone collar groom on. him at home, Yeah. and I pick up his one side of the Uh-huh. leg, so he's not able to put whole weight on his other side. Yeah. This is loud. It's okay. That's okay, you will be fine. Good job. We're just gonna put a fun little hat on you. You look There cute we go. with that. Yeah, he's like that. Looking like you're going to Right space. there. That's good. You look like a scientist. Look like an astronaut. Yeah, he's looking like he's going to space. It's like, I'm not liking these jokes. Says, you're not making fun of me, are you? Yeah. The blue color, blue origin. Remember that? What? Look like what you guys did. Yeah. Everything's fine. Good. His heart sounds really good. His lungs Okay. sound good. That's great news. Good job. I know we're gonna be really gentle here, okay? I'm sorry, my hands are a little cold. Good, nice pulses on both sides. Those are normal feeling. Are you feeling some muscles kind of like shaking when you're touching it? And right now, that's could be because I know he's been doing it at home too, but it can be just because he's nervous in here as well. Yeah. He's So- trying to look fine now. Because at home he's like, I'm not He's fine. pathetic at home. Yeah, right? yeah. No. No, that's okay. It's okay. I know you don't like your feet, but I'm just gonna do a little, make sure that that's okay. Good job. Can I feel your tummy? You're really tense. Yeah. We're pretty sure something is off. But no, I don't know. I'm more concerned because I'm due in a week. The timing. You're Yeah. gonna be a little busy. Exactly. Yeah. So Make sure there's nothing too bad going on. Yeah. Exactly. I was talking to my unborn baby. He was like, hey, hold on until Murphy Yeah, gets well. Just make sure Murphy's okay and we're all ready. Yeah. Okay, we'll go back to that. Good job, sir. Murphy, you're gonna be a big brother. Yeah. But Very he, excited. he's trying. Excited? He's very excited. He loves his little brother. Is it gonna be a good time? He responds so good when we take his name, like his little brother's name. Oh, really? Yeah. But the fun thing is when we ask him, where is your little brother? He runs towards the door. He thinks he's gonna come from the door. Yeah. I mean, I guess he is, right? When we come home. Yeah. You're doing good. He's doing great. Yeah. So I'm just feeling the areas where, like, I don't think he's gonna be painful first. Uh-huh. And then we'll do the painful ones last. So Yeah. the stifle feels pretty good, Molly. I'm not feeling anything major with dislocation of kneecap or anything. I don't feel any effusion there. He's not painful when I press on that area. So his knee feels good.
He gives me a little wincing over his right hip Correct. Yeah. area. More into his lumbar back. Okay. Can you extend your leg? He's like, no, it will not do it. Okay, that's fine. We'll go back to that in a minute. Oh yeah. Yeah, he kind of like sits down. He don't want Yeah. Mhm. It's to a stand on the back. yes. It's the problem on right side, right, Himanshu? Mhm. Okay. Yeah, when I Yeah. was watching him walk Yeah. too, it was more Yeah. the right side. Right side. Yeah. So do you know how to check for iliopsoas? Yeah, you like press under. On the underside of the opposite hip? Yeah. Yeah, like right in there. So he's not faking it. He has He's some. not faking it. Okay, No. so he has problem. Because when we saw him running towards us, No, they get a little adrenaline rush. yes, here. I was like, was he faking? He's making sound, right? He is. Yeah. He's- Okay. he's a Discomfort. little uncomfortable. Yeah. So where I'm getting the most discomfort is actually good job. Good job. Oh, so good job. Let's find some chicken treats for you. Is right at the base of his back Uh-huh. and his sacrum. So that really lower back. Okay. You might know a thing or two about lower Yeah. back pain right now. Yeah. 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 But that's where he's also a little uncomfortable, like here. I do think it's more of his like back hip area Mhm. versus the leg itself. Mm. But it is a pretty common spot for dogs like this. Does he do like jumps off of? Yes. Yeah. He does it a lot. Yeah. And that stress on that Uh-huh. lower back Mm-hmm. can cause sprains, strains. I'm more thinking that that's what's going on right now. Okay. We can also see something called intervertebral disc disease. Mm-hmm. What that is kind of like a slipped disc in people, Mm-hmm. and it can be more serious. Mhm. It can end up causing paralysis or trouble walking. I think that's a little less likely for him right now, based on what I'm seeing, what I'm feeling, Mm-hmm. and what he's showing me. Okay. Okay. Now, there's not really a good way to rule out between those two things Mhm. unless we're talking things like MRI. He doesn't need that today. Okay. So what I would say for today is he needs some pain medications. Mhm. He needs some rest, Mhm. and hopefully he'll be improving here. Okay. So, So yeah. we're not going to do any scans today? Like- No, I don't think there's. So X-rays are the things that I can do today. Yeah. An X-ray is not really going to be super helpful to Okay. rule in or out. The reason I do X-rays is I say, is there a fracture or is No. there not a fracture? And I can tell you right now. I don't think he has a fracture because I can say this problem it has built over Yeah. a long period of time Yeah. because I'm observing him from last 15-20 days. Yeah, for sure. Yeah. So I think it's more of that soft tissue, which X-rays won't show us. Yeah. And we have stairs for him to jump on the bed or come off the bed, but I think the problem is when he goes on and off the stairs. He Or the just, sofa. Yes, or the Yeah. sofa. He just jumps on it. Yeah. For yeah. bed, there is a stair. He can just walk up to the Yeah. bed. with So it. that's gonna be the challenge for him. Mm. All right, Sarah, let's take this off and get you down. Good job. Okay, that's gonna be the challenge for him. So what we'll do is we're gonna get you an anti-inflammatory Mhm. and also kind of a good kind of neuro pain relaxer sort Okay. of medication for him. Okay. Okay. And Yeah. we do have like, since we have mentioned that Mhm. some pain medication leads to bad tummy for him. He has a very sensitive tummy. Sensitive tummy. Yeah. So is the one that you were saying, is it going to have some kind of effect like that? It can. It's pretty rare. Let's see what Looks he's. like he's been on. But he is on he's that had before. diet, like sensitive stomach diet, so might be it will So help. was him. it
it looks like he has had some of the carprofen before. Did he do okay on that? Yes, he did okay. Okay. Yes. Yeah, Okay. he did okay Cool. with that. That's what we'll do then. Yeah, Okay. I think that was injectable, right? Can you see the history? No, that's gonna be a pill. I'll look back in his records. Okay. And just make sure that we, Yeah. and we can double check that. Okay. But yeah, I think good news is I'm not feeling any major swelling, etc. So here's what we'll do: we'll do our medications. We should be able to get him feeling better. If it is just the sprain that's kind of been building and he keeps aggravating, Yeah. a period of rest and some medications should see him right. If he is getting worse again, if it's not helping, if it's continuing to get worse, then the next step really, especially for something a little bit more complicated like this, when it's not just an obvious, oh, it's a cruciate tear or a toe fracture, like something like that, right? If you're really wanting to get to the bottom of it, is going to be a visit with maybe even a surgical or a orthopedic specialist, Okay. because they're going to be able to say, okay, we're thinking about this specific muscle, and we recommend this ultrasound or this CT or that, you know, just to kind of make a diagnosis. Yeah. And that's if it's not getting better with the treatment. Okay. Okay. And Okay. do we have that in this hospital or? Yeah, so that's Yeah. something that is a referral, Yeah. and that they schedule out. But if you are looking over the next couple weeks, you get your baby situation taken care of, and then you're Yeah. like, gosh, Murphy's just having some days where he's still a little ouchy, you know, the medications work, but let me know, and I Okay. can make that referral. Okay. Okay. Thank you so You're much. welcome. Yeah. Of course. So Look how happy he is now. We'll go get your medication ready. Yeah, thank you Yeah, so of much. course. Ui, Jugu. Pani. Mangshu, being honest to you, I wanted to get his scan done today. बाकी तो बोल रही है वैसा लग, और मैंने भी दे देखा जब वो चेक कर रहे थे ना, जहाँ एग्जैक्टली वो बोले वहीं पे वो ऐसे कर हाँ, रहा है। उसको वहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट है. हाँ नहीं, वो बोले वो जिस जगह पे टेस्ट करे वहाँ पर नॉर्मल मतलब फ्रैक्चर या वैसा हम एक कुछ काम नहीं करते है। हैं, हम खुद इसकी एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं घर पे ना. मैं मसाज और एक्सरसाइज में पूछ लेती हूँ. ओके. आई एम सो सॉरी गाइस, आई वाज नॉट एबल टू आंसर यू बैक क्योंकि डॉक्टर आ गए थे. सो थैंक्स फॉर सेंडिंग prayers. Yeah, आपने देखा, आई नोटिस्ड ऑल्सो दिस थिंग द वे मर्फी इज लुकिंग इनटू हिमांशु's आई. जब वो डॉक्टर चेक कर रहे थे ना इसको, ये ऐसे आपकी आंखों में देख रहा था. लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला। पानी पी ले मेरी जान. अभी ना थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा वो लग रहा है इसकी आंखें में चमक. घर पे तो ऐसे रो रहा था. हो रहा है, सही बात है, अभी जाके थोड़ा सा हुआ है। है ना, छोटा भाई आने वाला, जल्दी से ठीक होने. वो इसको पानी पिलाओ यार. पिएगा तब ना। ये देखो ऐसे कर रहा है। उसको पता है वो क्या करता है? आपने देखा है जब उसको थोड़ा सा वो होता है तो खुजली हो रही है। जोर से जो वो मारता है ना, वो मार ही नहीं रहा, वो थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देता है। हाँ, कल भी मैंने देखा कि वो फिर बैक बैक लेग तक जब जाएगा। उठा रहा था ना. मुझे आप लग इसको रहा है- यहीं छोड़ दो हिमांशु और पानी पिलाओ. अभी डॉक्टर नहीं है ना, उसको कंफर्टेबल रख दो थोड़ा सा ना. पानी पिलाने की कोशिश करते हैं इसको ना. पानी पिएगा? पिएगा मेरा जाना, पिएगा मेरा बच्चा. अरे इसको ना पेट भी दर्द कर रहा होगा, इसने सुबह से एक बार सुसु नहीं किया है. हाँ, छोड़ो छोड़ो. चिटू चिटू, वेट चिटू, गुड जॉब. वेट। बैठ जा मेरा बच्चा. वो वाला पानी बोतल. मम्मा आपके लिए लंच भी लाई थी कि अगर मफ़ा को ज़्यादा रुकना पड़ा तो. ऐसे नहीं निकल रहा है, रात लग जाएगी. उतना भी पी लेगा तो बड़ी बात हो जाएगी। थोड़ा सा ही निकालो. हाँ, हाँ, फेंकेंगे नहीं। get well soon. Thank you Murphy, I'll be fine. Thank you Murphy. तुम्हें तारा, अच्छा ये कोई और लैंग्वेज है. I'm sorry, what happened to Murphy? मर्फी को बैक में कुछ इशू हो गया जिस वजह से वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए हम उसको इमरजेंसी में लेके आए हैं. क्योंकि सुबह से वो वॉक पे नहीं जा रहा है, सुसु नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. वो बिल्कुल वेट ले ही नहीं रहा है अपनी बैक लेग्स पे. नहीं पीना। लाडा थोड़ा सा पी ले प्लीज. थोड़ा सा please। प्लीज, गमी है बेटा. गमी लग रही क्यों? गमी। What happened to Murphy? He will be fine. हाँ, मर्फी को क्या हुआ हमें भी अभी नहीं पता है. अभी देखते हैं इसको मेडिसिन देके. इसको बस पेन है बहुत ज़्यादा बैक साइड पे. बैक में पीना उसको।
डॉक्टर ने बोला है कि इट्स मोर ऑफ बैक पेन रेदर देन अ लेग प्रॉब्लम, और वो मैंने भी फील किया सुबह। मैं आपको बोल रही थी ना उसके मसल्स शेक कर रहे हैं जब भी मैं टच कर रही हूँ उसको बैक साइड पे। तो बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। जंप करता रहता है तो कहीं लग गई उसको, और वो स्ट्रेन ओवर टाइम डेवलप हो गया क्योंकि वो बार-बार जंप कर रहा है, टिकता हाँ। नहीं है ना। एक बार लगी है और बाद में जब देख रहे हो आप, जब तक पानी था वो बिल्कुल नॉर्मल था, अब जैसे पानी फेंक दिया वो फिर से अपना दिखा रहा है। ये वही करता है, घर पे भी ऐसे इतना डाउन हो जाता है, डॉक्टर को देख के थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हूँ। पानी क्यों नहीं पी रही है तू? हम भी करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा थोड़ा सा मैं तो ठीक हूँ, मुझे नहीं ले जाना डॉक्टर। होगा ऐसे नहीं पानी करते। दूँ मैं फिर? पानी पिएगा? पानी दूँ? एक काम करो, बॉटल इसके आगे रख दो, जैसे मुंह डालने लगेगा ना पानी डाल देंगे फिर, या फिर टिश्यू से ही पिलाओ फिर से, वही वही बेस्ट है। मुझे लगता है टिश्यू से इसके मुंह में पानी डालना बेस्ट है। ये देखो रुक गया, ये बहुत बड़ी नौटंकी है, ये कौन सा कम है। होगा वहाँ से टिश्यू ले लो, मैं दूँ आपको? वही करो, इसको हाइड्रेट करो थोड़ा सा। कुछ नहीं कर सकते मर्फी हम, तो हमें ऐसे ऐसे मेथड्स, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो मैं इससे करता हूँ। ऐसे ऐसे मेथड्स निकलवाता है ना ये हमसे। ये देखो थोड़ा सा पहले खोल लेना मुंह, है ना, एंड स्क्वीज इट। करो बच्चे, हो जाएगा, आपसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा मुंह खुलवाओ, ये गुड जॉब। स्क्वीज कर पाए? नहीं अच्छे से तो नहीं कर पाया, थोड़ा सा किया तो उसने ऐसे किया तब मारी तो। हाय मर्फी, हाय गाइस, थैंक यू फॉर प्रेइंग। हाँ करो जल्दी 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 जल्दी, गुड जॉब। थोड़ा सा गया। आप भी ऐसे डरते हो ना, आपको लगता है कि उसको लग जाएगी। रुको आप पकड़ो फ़ोन, मैं करती हूँ। फ़ोन पकड़ो, मम्मा आएगी, मम्मा इज़ अ डॉन। देख रहे हो जैसे हटते हो फिर से हाँफता है। मम्मा इज़ अ डॉन, मम्मा जी तो नहीं बच सकते हो आप। हाँ देखा, अरे वाह, पानी पिलाने की निंजा टेक्निक। वो पानी नहीं पी रहा है तो हम टिश्यूज़ पे पानी डाल के दे रहे हैं। उतार दो। Hi. So we're just filling those meds. Do you, if you have concerns about like his like kind of tummy with some of these, would you want some like prebiotic to like for us to send home with him? Giving him prebiotic. You already are? Yeah. Okay, perfect. Okay. Is that okay? Yeah, no, it's perfect. I just want to see. Hi, buddy. He looks so happy up there now. फिर से चलो, फिर से चलो बोलो। और नहीं पानी नहीं पिलाएगा, बस हो गया, हो गया। थोड़ा सा ही पी ले। अब पकड़ो। ओह मम्मा, पकड़ लो इसको। ओके मैं लाइव एंड कर देती हूँ अभी। Okay guys, we are going to end this live. Thank you so much for sending your good wishes, your prayers for Murphy. I hope he recovers with medicines. उन्होंने क्या बोला हिमांशु की स्कैन वो बाद में कराएंगे अगर मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो, है ना? हाँ मैंने बोला कि अगर अभी मेडिसिन ट्राई करो, अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, वर्सन हो रहा है तो फिर ऑर्थोपेडिक, हाँ ऑर्थोपेडिक को दिखाएंगे या सर्जन को। बट बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास बहुत कम विंडो है। बट ठीक है, और जल्दी से ठीक होना है, बड़े भैया ना आप। सर्जन से दिखाओगे फिर? सर्जन है वो। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर you all, and thank you so much for sending your prayers to your baby. He is my baby. देखो मर्फी का नाम लिखा है और हिमांशु का नाम लिखा है और अनिका, सबका नाम लिखा हुआ है। चलो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।